Hi guys, welcome to Astra Tarot. My name is Yachna. I'm a psychic tarot reader and also a trauma informed life coach. Uh, आज का दिन मेरे लिए बहुत मिक्स्ड एक्सपीरियंस था एंड हो सकता है यू माइट ऑल्सो बी हैविंग अ वेरी मिक्स्ड इमोशनल कंफ्यूजिंग रेस्टलेस डे. So just before going to bed, I just thought I want to do a small reading for what's happening in your life. हो सकता है कि आप लाइफ की ऐसी स्टेज में हो जहाँ आपको पता नहीं चल रहा कि what is happening, like where are you going. You might be confusing your growth or the changes that are coming in you with confusion or self-doubt. So if you are somebody who's experiencing self-doubt या आप continuously उस thoughts में हो कि what is happening, क्यों हो रहा है ये सब, कहाँ जा रहे हो, क्या होने वाला है, but कहीं ना कहीं आपको एक inner knowing है that there were major big cycles that had to end in your life. कुछ लोग, situations और हो सकता है आपका एक पुराना version is dying and you are transitioning to your next version, and you might be confused that are you on the right path, are you doing the right things. So उस clarification के लिए I just want to tap in to the universe and see that what is really happening. What's going on. क्यों इतना बेचैनी सी है, इतनी सैडनेस सी है लाइफ में अभी. What is coming. और ये जो भी हो रहा है इसका क्या मतलब है. Okay, Page of Wands. First card that I got is Page of Wands. In this card also, I don't know if you can see that, I feel that you are moving ahead into a new direction and you have all the resources to do so. You have all the planning, you have the ideas in your mind, but कहीं ना कहीं आप उस एक सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में आओ कि will it work out, will it really be fruitful, will your planning be successfully implemented, या जो आपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्या वो सही से जाएगा. Will you reap benefits out of all the hard work that you have put in coming so far in your journey and closing old things and patterns and jobs and roles जो आप unknowingly, unconsciously अपने roles लिए हुए थे to take care of people and to probably fulfill everybody else's expectations of you. But now you are set and determined fully to move ahead in your path, on your unique path. But कहीं ना कहीं वो बीच में एक आता है ना कि कुछ नया शुरू करने से पहले एक डर सा आता है, एक डाउट आता है. So Page of Wands reflects that you are ready for action, for movement, but somewhere, okay. Second card I have got is Seven of Swords. Seven of Swords is like deception, illusion, some strategy, strategic moves that you might be taking. और हो सकता है कि आप ओवरथिंकिंग जोन में हो, आप बहुत सोच रहे हो कि ये चीज़ गलत ना हो जाए. पहले जैसे आपने शायद अपने काम में, अपने अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया फेथ डाल के, बट वो it did not go long, it did not went well, and now you are just
बीइंग कॉशियस दैट आपने जो पहले गलतियाँ करी लोगों पे विश्वास करने की या ये सोचने की कि दे आर अ मैच टू योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, कहीं आप दोबारा वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे. बट हो सकता है कि आप पहले किसी कोलैबोरेशन या किसी इंसान को ढूंढ रहे हो कि जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ो. पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है. बट नाउ यू आर just keeping your eye on your target and you feel that you are equipped enough and you have enough experience of your life and your past mistakes that you can go forward on your journey on your own. You don't need anyone. So वो कहीं ना कहीं जो past के strategy थी या जो एक betrayal मिला शायद आपको, या वैसा effort नहीं मिला लोगों से, support नहीं मिला. So you are in self-doubt because of your past experiences. That is what I would say, which were that people were just trying to steal from you, and they were more deceptive. They were keeping things to themselves. They were not sharing 100% truth with you. They were not 100% transparent and honest with you. So that is what is putting you in self-doubts. यही रीज़न है कि आप रेस्टलेस हो, कि आप अकेले अपने मिशन पे, अपनी पाथ पे सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं. देख लेते हैं व्हाट इज़ द आंसर टू दिस. ओके, डियर यूनिवर्स, गिव मी दिस. व्हाट इज़ गोना हैपन ऑन दिस जर्नी दैट माय व्यूअर इज़ गोइंग टू स्टार्ट और इज सेटिंग देयर फुट ऑन. Knight of Wands. Okay, so from Page of Wands to Knight of Wands. Let me show you this card. So universe ये बोल रहे हैं कि don't be afraid, move ahead, and आप बिल्कुल सही पाथ पे हो. आपके पुराने एक्सपीरियंसेस आपको सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, बट यू हैव आई थिंक गेन्ड विजडम एंड यू कैन सी थ्रू पीपल्स डिसेप्शन. You can see through people's mask कि उनके real intentions क्या हैं. But you can make a logical, rational decision now. And in your journey, you will be moving ahead with full force. Knight of Wands is somebody who is fiery. मतलब इसमें ये दिखाता है कि आप अपने आप में इतना पैशन है कुछ चीज़ अचीव करने का या क्रिएट करने का, अपने लिए एक ब्रांड इमेज, अपने लिए एक नई सोशल प्रेजेंस, एक रियल प्रेजेंस, एक लाइक यू नो अपना कोई ऐसा छिपा हुआ स्किल जो शायद अभी तक आपने अंदर दबा के रखा था. आप में उतना स्पार्क है दैट यू विल यूज़ दैट टू क्रिएट थिंग्स फॉर यू एंड मार्च फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग दिस abundance with your skills that you are enough. You don't need, you can in fact lead people, right? You don't need to be a follower. So Page is a very naive, very starting internship kind of intern, new starter, beginner energy, while Knight is like you've already traveled this journey of being a fresher, somebody who's a newbie, you know, amateur, to becoming somebody who's experienced in taking action, getting results, planning, pivoting, कुछ नया क्रिएट करना, अपनी हिट एंड ट्रायल करना. अगर एक चीज़ नहीं वर्कआउट होती तो उसका कुछ और ऑप्शन निकालना, नए एवेन्यूज़, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, नए लोग ढूंढना जो आपकी इस जर्नी में अलाइन करता है. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू हैव इनफ विजडम, टूल्स, एक्सपीरियंस, एंड आई वुड से क्लैरिटी ऑफ डिसर्नमेंट टू मूव अहेड इन योर जर्नी. आप जो भी ये काम कर रहे हो, एंड आपकी इनर फायर काफ़ी है to tune into and give you that fuel every day to come and show up and like put efforts into this new thing that you're going to start. Or I would say you already have planned if you've taken the steps. It's just that you are kind of in that confusion वाला, या आपके mind जो है वो tricks play कर रहा है because of the past deceptive या betrayals that you might have got. सो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यू हैव ऑल दी पोटेंशियल, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्रिएट ऑन योर ओन. और हो सकता है ये आपकी खुद की जर्नी है कि इस पाथ पे मे बी दिस इज पाथ इज़ मेंट ओनली फॉर यू
to explore and create your unique presence. You don't need anyone right now. And when you expand, then people will follow you. So Knight is a person, of course, who has eventually people who will follow his command. Okay, so don't worry. Ace of Cups. Okay, I will take this card. Ace of Cups is also that you are attracting a very new beginning in your life, which is supported by the universe. I would say कि divine आपको या आपके ancestors, आपके spirit guides आपको एक नए रिवॉर्ड, एक नई रिकोगनिशन, एक नया लाइमलाइट स्टेज देंगे, वेयर यू विल सी दैट योर कप इज़ ओवरफ्लोइंग विद द सक्सेस और अबंडेंस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, राइट? सो यू आर ऑन द राइट पाथ एंड कीप बिलीविंग दैट यू आर नॉट एनी मोर द पेज ऑफ वॉन्ट्स अ बिगनर, बट यू आर एन एक्सपीरियंस्ड, mature, emotionally balanced person who has probably made all the mistakes, learned their lessons, and know how to tread forward in your path. So keep going, because this is what is waiting for you. A cup of fulfillment, money, fame, recognition, a lot of applause. I feel an energy where people will surround you and they'll clap for you. This is what I'm getting. और आपको ना मतलब इवेंचुअली लगेगा कि जो आपने साम दान धन भेंट सब मतलब जो भी था सब अपना एफर्ट लगाया ना टू क्रिएट दिस और टू स्टार्ट दिस, कुड बी न्यू वेंचर, न्यू जॉब, प्रमोशन, जो भी मतलब क्रिएटिव आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके लिए यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड, यू आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड, रिवॉर्डेड, सेलिब्रेटेड, एंड पीपल आर गोइंग टू सी दैट, और स्पेशली ये पुराने लोग जिन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, या दे थॉट दैट ओके दिस नथिंग ग्रेट अबाउट यू, they are going to watch this, that everybody else is going to clap for you, everybody else is going to celebrate you and fill you with so much of I would say glamour. You'll experience glamorous movements and people will be really looking up to you. Matlab, they will be putting you on a pedestal and with cheer for you that you are succeeding in your life, and while you are getting this abundance, these old people are going to just watch from a distance and see that why didn't recognize that you were such a creator, you were such a very I would say dignified, genuine, hardworking, focused, creative. मतलब आप में इतना पोटेंशियल उन्होंने कभी देखा नहीं, और अगर देखा भी होता तो शायद वो इग्नोर करते थे बिकॉज ऑफ देयर जेलस नेचर, और दे वर एनवियस, और दे वर ऑलवेज इन दैट वन अप एनर्जी, लाइक आपके पीठ पीछे प्लान्स बनाना या आपके स्किल से वो शायद जलते थे. मतलब दे नेवर मे माइट हैव टॉक्ड अबाउट ऑन योर फ्रंट ऑफ कोर्स, बट एट योर बैक दे वर जस्ट लाइक वेरी जेलस ऑफ कि आप इतने मल्टी पोटेंशलाइट हो, आप में इतने गुण हैं, मतलब you can just start from zero again, you know, that kind of power they did not recognize, but the universe has recognized and will always recognize it, and now it's time for you to receive your well deserved limelight, abundance and fame, name, जो आपने manifest किया, you are going to receive that. Okay, so I hope guys आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो about what is exactly going on, और आप ये क्यों restless और self doubt energy में थे. So it is a big reminder that keep moving ahead, keep marching ahead with full confidence, because you have that inner flame and spark to keep going a long way and finally receive the award that you always deserved. Okay, so keep going guys, and I hope you like this reading. Like always, this is a collective reading, so take what resonates with you and leave the rest. अगर आपको इसमें से कुछ भी resonate किया, do comment and share that what is this new thing that you are looking forward to. I will be very curious to know. And do like, share. If you know somebody who is going through this situation, do share this video with them. And अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आई कैन कीप कमिंग, I myself can keep
myself motivated to come and give such readings, which can be a little nudge, can be a little encouraging for people who are already on their paths. We always need that divine guidance. We always need those small signs, small readings, small suggestions and guidance. Okay, I'm glad that the universe chose me to pass this message on to you. And yeah, so I'll close this reading here, guys. Take care of yourself and keep loving yourself, and just know that you are like one man army. You don't need a lot of people behind you, because universe has your back. Take care, bye, and I will meet you again in my next reading. Till then, take care and keep loving yourself like always.